ये भी मैंने बात की थी उनसे, 1985 में भी मैंने बोला था। बहुत महंगी आती है खाने की मशीन वैसे भी, अपने तो 200 200 रुपये में आ जाता है, कम बिकती है ना। ये एंड्रॉयड कीपैड डेमो है। एंड्रॉयड कीपैड ये हम रिस्ट में एंड्रॉयड रिस्ट वॉच फ़ोन की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, और एंड्रॉयड रिंग फिंगर में भी ये कीपैड हो सकता है। इसमें दो 7 सेगमेंट एलसीडी से रिलेटेड अगर हम देखें तो जो लेफ़्ट साइड में 7 कीज़ हैं, 7 सेगमेंट है, और राइट साइड में भी 7 ब्लैक कीज़ है, वो भी 7 सेगमेंट है। तो इसमें हम इनको डिलीट्स करेंगे तो करेक्टर्स जैसे ग्रोएंगे वैसे हम लिखेंगे। तो अब हम इसका स्टार्ट करते हैं कि इसमें क्या क्या कीज़ लिख सकते हैं। सबसे पहले हम ट्राई करेंगे सिंगल सिंगल कीज़ को प्रेस करने की। तो जैसे अगर हम लिखते हैं एंटर की, एंटर की तो पहले से ही ATNT लिखा है, तो एंटर दबा दो तो एंटर आ जाएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं ए देखो, अगर हम इसको देखें तो अब नाउ ब्लैक कलर कीज लाइक these this looks like a capital A, like 6 4 3 5 2 1, these keys looks like capital A. So if I will double tap, it will become A. Now if I will press this key, fourth key, it is looking like A, because if we write through pencil it will look like A. So now we will double tap, it will become A. Now we will do I. This also looks like I, because capital I we write look like this, 9 9 and further one 9. So I. Okay, in this way if we are not getting, then what we can do, we can have a rectangle type settings, and then we will do rectangle, then we will see how it works. Okay, just once, rectangle we have to make it. Now we will go and check. Yeah, now we see 8 2 segment LCD in black colors. So now if I will make it looks like A, capital A. So double tap A. Similarly A, E, E, U, U, A, A, O, O, in that way. So but for now we will do again, make it rect. So this keypad can be on our ring finger or our on our wristwatch. So okay, let us again set it for wristwatch keypad settings. If we will make it rect buttons, it will be for wristwatch phone, Android wristwatch keypad. And this can also be used with KDE Connect remote keypad. Okay, now we will write all the things. Okay, so this keypad we can download from github.com, Java 810 MTR88 download. In there will be an mtr88.apk we can install in Android phone. Okay, now we will start the characters and we will write all the characters. A, E, U, A, O, Ang, Ye, enter. Okay, B,
then we have to make it B, back. So shift, with shift it will become capital B. My font is different, so this is looking like back pointer because capital B is not needed, but in your phone it will come as capital B. Okay. Now C is little bit difficult, we can write, this is the way C we can write. Or another way to write C is yellow color keys. Yellow color keys we have to press, and then yellow label we have to write and press C. This is the another way of writing C. So there are two ways for writing C. Either we have to grow, delete, make some keys yellow so that black keys look like C, or we have to use the yellow key here and then we have to print the label C. D there is no label because D is easy. We have to make two keys yellow, then black color looks like D, so we have to double tap on the same last key. Now it came as D. Now comes to E. E is here. Okay, escape is also there, that will work with remote key, that we will show in another demo, KDE Connect. Okay, now F we can make F because black color look like the F, so F. Now G, how to make it? Like if we will draw from pencil, our pencil we will draw on 3 4 6 0 1. It means 2 and 5 I have to press so that it looks like G. See, now it looks like G. Black color capital keys, black color keys looks like G. So I will double tap and it will become G. H. So these now black colors look like H. So I will make it H. So in this way, I, J, okay, I will delete because it is J, we see, is not in chemistry. There is no chemical element in periodic table where is J is there. Like zinc, ZINC, zirconium, ZR. So J we can bring in maths and remove from the chemical sciences, medical sciences, engineering sciences. So it will be used as a mathematical part, J, not a problem. Okay, J. Then next is K. K, how we will do? It looks like K, yellow color. Sometimes yellow color will look like, and sometimes black color will look like the wanted character. L, M, N, O, P. Why it was P? Because if we see black color, 4 6 3 2 5, these if we will draw pencil inside these rectangles, it will become P only. इससे P बनेगा. अगर 6 4 3 2 5 में अगर हम ड्रा करेंगे तो P बनेगा, तो हम इसको P से ही. Now we will do enter. Okay, now Q, how it will looks like Q. Okay, this is Q. Okay, leave it. Now we can remove this also, not needed much. Now we will go for small or. Small or means simple small or, how we will write in computer. 5 and 6 if we see yellow, these two yellow keys looks like, yes, these two looks like how much? They look like R. So we will do double tap and it will become R, not a problem. Now comes S. How we will, S we will make it like this, like elliptical, like first we will draw pencil in 3 4 5 1 0. It means 6 and 3 we have to make it yellow and it will become yes. Then we have to make it T. T is written, so we can write. Or another way of writing T is also there. We will check if it works. Okay, it has not worked. It has worked for 7. Not a problem. So another is U. We will delete it, 7 U. Then V, because it is V now. W. If we will see, it looks like W. 4 5 2, yellow color W. Sometimes black color makes character, sometimes yellow. So W. Now becomes X. X is difficult in this. How to draw?
So we have made the character itself X. So if we see the character 3 yellow color label is there, so yellow key we have to press with the yellow key and then double tap X. Y we can make easily, which looks like Y. If we see, it looks like Y only. 4 5 2 1 0 looks like Y. Oh, sorry, because we have to press the last key, that only, then only it will work. The last key press should be double tapped in this. Okay, Y. So we have seen like almost all character has come. A B C D E F G H I J K L M N O P Q also we came, but we did not, I neglected it. R S T U V W X Y Z J also it came. Now we will go for capital keys. Okay, enter. Shift key is there. If we see blue color, so shift will work for capital key. Same keys it should work actually. Maybe some are pending. Okay, here it will bring an ampersand because A and A are different, दो डिफरेंट करेक्टर है. ए मतलब एप्पल, आ मतलब आम, तो हिंदी में आ ए, तो इसलिए ये शिफ्ट के साथ एम्परसेंट बन जाएगा. शिफ्ट के साथ अब हम इसको करते हैं बी को, तो देखते हैं क्या होगा. या बैक की बी कैपिटल बी आएगा. अगर आपका फ़ॉन्ट चेंज, ये फ़ॉन्ट्स की वजह से कैपिटल बी ऐसे आ रहे हैं. अब हम देखते हैं सी, कैपिटल आएगा, ये सी ऐसे ही है हमारा, लेकिन अगर आपके में आओगे कैपिटल सी आ जाएगा. अब डी करते हैं. डी ये आ गया, द आ गया. अब ई देखते हैं, अगर आ जाए तो ठीक है. ई इज इक्वल टू, इसको हम इज इक्वल टू सिंबल भी क्वेश्चन ई के साथ क्वेश्चन मार्क के इस फॉन्ट में, तो इज इक्वल टू. अब हम करते हैं एफ बनाने के लिए ब्लैक कलर एफ बनाया है और शिफ्ट के साथ दबाएंगे तो कैपिटल एफ आ गया. अगर हम इसको विदाउट शिफ्ट के साथ दबाएं तो छोटा एफ आएगा. नाउ जी, इसको शिफ्ट के साथ दबाते हैं तो जी आ गया. जी ग्रेटर देन और इक्वल टू है इसमें, लेकिन वैसे आपके में जी आएगा. अब देखते हैं एच, कैपिटल एच आ गया. अगर हम ऐसे ही प्रेस कर देंगे तो एच आ जाएगा. ये सॉफ्टनर है, कॉन्सोनेंट को सॉफ्ट करता है, वो बाद में देखेंगे. अब फिर से आई बनाते हैं. आई लो पॉइंटर बना दिया, वैसे आई आएगा, डोंट वरी. आई के बाद फिर आता है जी, कैपिटल जे. अगर हम जे ये देखिए तो ये मैथ्स में भी है. ये अगर आप देखोगे आल्ट के ऊपर भी जे लिखा है, काम लेंगे इसको, ये न्यूमेरिक मैथ्स है. जे मीन्स 11, ZILEVEN. जे इक्वल टू, जे मीन्स 11. लिख भी देते हैं 11. अब एंटर. तो 11 के बाद अब आएगा जे के बाद आता है के तो लिखना आसान है. के, इसको पर अगर हम कैप्स लिखना है तो हमको शिफ्ट के साथ दबाना पड़ेगा. के को अब पॉइंटर बना रखा है, क्योंकि कैपिटल के का कोई जरूरत नहीं है. तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग तो इनसेंसिटिव है, इंटरनेट भी इन केस इनसेंसिटिव है, तो इतना कोई जरूरत नहीं होता. अब शिफ्ट के साथ एल बनाते हैं, तो इससे भी कोई करेक्ट एल, ये 10 की तरह लग रहा है, तो 10. ये हेक्साडेसिमल में 10 की तरह है. हेक्साडेसिमल वैसे कैपिटल ये यूज़ करते हैं, लेकिन हम ये एल ऐसे वाला 10 जैसा एल यूज़ कर सकते हैं, तो 10 हो गया. फिर अब हम करते हैं एम, शिफ्ट के साथ देखते हैं कि क्या होता है. एम, तो ये इंटरसेक्शन भी हो सकता है मैथमेटिकल, तो ये एम हो गया, इंटरसेक्शन वाला मैथमेटिकल एम हो गया. फिर एन, शिफ्ट के साथ ही करेंगे. एन, अंग, ऐसे अंगूर, तो अंगूर में काम आएगा. अब हो सकता है शिफ्ट ओ, देखते हैं फिर से ओ के दबाते हैं, शिफ्ट के साथ करते हैं ओ. अगर हम देखें ध्यान से तो ये इसके अंदर अगर हम ओ को अगर हम अच्छी तरह देखें तो ओ क्या है भाई, इन ऑपरेटर हो गया. ओ के अंदर डॉट लिखा हुआ है कि दिस एलिमेंट इज इन दिस सेट और नॉट. सो कैपिटल ओ को हम इन ऑपरेटर की तरह यूज़ कर सकते हैं, वेदर सेट एलिमेंट इज इन सेट और नॉट. ओके, नाउ शिफ्ट पी.
pointer to above. Pointers are in C, so shift P can be used for pointers. Okay, no problem. Now P, K, L, M, N, O, P, then Q. This is for quell. Quell means 12, hexadecimal 12. If we see, if we press without shift, it will become search lens. Capital Q we can use for search lens. Search, Control F, search and replace. So it is a lens with a pattern matching, two tildes inside. So capital Q can be a lens for searching the text. Okay. Then comes R, shift R. R. Shift R means remainder division. Shift R means remainder division because sometimes we don't need quotient, we need the remainder division. So, okay. Shift S, summation symbol. Summation is needed in Excel sheet, so summation symbol. Shift T, तय. This is for Hindi तय. तय से तरबूज. Then comes URST, shift U, union of sets. Shift V, shift V means left shift. लेफ्ट शिफ्ट काम आता है बिट्स एंड बाइट कंप्यूटिंग में. बिट को अगर हम एक बिट लेफ्ट शिफ्ट कर दे तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये कंप्यूटिंग में बहुत यूज है इसका. शिफ्ट डब्ल्यू, ये किस लिए हो गया शिफ्ट डब्ल्यू? ये हो गया आपका 3 को अगर हम लेटा दें तो वो कितना बन जाएगा 13, तो ये 13 ही है जो कि डब्ल्यू बना है. 3 व्हेन लाई डाउन इट बिकम्स 13, सो इट इज इन हेक्साडेसिमल 13. We can say it as W also. Okay, now 14, X, shift X, capital X. Okay, so this is shift U, sorry. Now W X. Now we have to make it shift X. Okay, shift, how to make yellow X, and then okay, it has not work, we will make it work. This is a bug, so shift X will be also there. Actually it should come when we press yellow X and shift, then capital X should come this side. Okay. Then shift Y, shift Y, yes means tick because capital Y means yes, tick. Okay, then shift Z, not equal to is also needed, and it looks like ZR, capital Z, so it is okay. Now, so all symbol. Now we will see how the numbers will come. Okay, enter. So we will make first with num key, we will press num key and then 0, num 1, 1, num 2, 2, num 3, 3, num 4, 4, num 5, 5, num 6, 6, num 7, 7, num 8, 8, num 9, 9, num 10, lane or 10, whatever you want to say, num 10, 10, num 11, 11, num 12, 12, num WW. Oh, it became fault, not a problem. Actually it should have come. Okay. Actually W will not come. What we have to do, we have to make it num box and then W will come, W, and this we will delete it. How we will delete? This plus shift. Okay, so W and F are typical. W and Fain means 15. W is the like lying down 3, so 13. Okay, then we can go, what we'll do. Okay, Fain we have to write it again. We will make it numeric Fain. We will see if Fain comes, not come, then we will delete it, not come. So what we will do, we will make num off. Red color means num has become off. First we will delete unwanted character. Now we will press both the keys.
maybe it can come fail. Okay, so some bugs are there. So guys, if you find some bugs, you can let me know, we will resolve those bugs. Okay, now another way is writing, we will make numlock on. Now numlock was on. Now we have not to press num की अगेन. अब हमको नम की बार बार प्रेस नहीं करना पड़ेगा, एक ही बारी में करने से आ जाएगा. जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7, 7 के बाद 8 9 10 11 12, 3 का और लेट आया 13 14 अक्सेन, फिर 15 लिखना तो खैर मुश्किल है ही, क्या करें. तो इन दोनों को ट्राई करते हैं साथ लिख के कि भाई इन दोनों से अगर चल जाए तो फेन आ गया. तो नम की अगर ऑन हो तो भी फेन आ जाता है. अब इन दोनों को दबाना पड़ेगा फेन के लिए. तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 J 11 12 12 12 13 W एक्सेन फेन, या 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, फिर 80. 80 कैसे लिखेंगे, अगर हमको 80 लिखना है तो हमको स्पेस दबाना पड़ेगा, तब 80 आएगा. अभी तो नहीं आएगा क्योंकि नंबर था. तो पहले हम इसको वो करते हैं और फिर इस करैक्टर को डिलीट करते हैं स्पेस दबा के. अब हम 80 दबाते हैं नम के साथ ही. 80 अगर हम देखेंगे तो 1 और 0 से बनता है. ओहो, गलती कर दी, ये तो P बन गया, फिर से गड़बड़ हो गई. अब नम को ऑन किया, अब 1T 1 0 1T. then numbers also we have completed. now next comes to symbols. ओके, नम ऑफ करते हैं और एंटर करते हैं. अब सिंबल्स देखते हैं, सारे सिंबल्स हम एक एक करके लिखते हैं. सबसे पहले आता है डबल कोट. तो डबल कोट इधर से भी आ जाएगा, इधर से भी आ जाएगा. एक्चुअल में डबल कोट के लिए हमें सिंबल्स के लिए राइट साइड 7 ब्लैक कीज यूज़ करनी चाहिए, 7 सेगमेंट एलसीडी, और लेफ्ट कैरेक्टर्स के लिए फिर भी कुछ कीज इधर भी है. और अब सिंगल कोट के लिए येलो की है, तो सिंगल कोट आ गया. ये ऐसे दिख नहीं रहा तो हम स्पेस दे देते हैं ताकि ये दिखने लग जाए. अब देखो सिंगल कोट आ गया, फिर स्पेस दो. अब शिफ्ट के साथ दबाएंगे तो येलो की बैक कोट बन जाएगी. तो ऐसे सिंगल. अब दूसरा तरीका है कि शिफ्ट देखें बैक, इससे क्या आएगा, सिंगल आगे की तरफ है तो सिंगल कोट, अगर पीछे की तरफ है तो बैक कोट, डबल कोट. नाउ वी हैव टू राइट द ब्रैकेट. तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रैकेट वी हैव कीप हियर ओनली, like blue color brackets. If we see shift and these brackets start and then inside we can write anything. Okay, again we will do shift bracket. So both the brackets come because these are need. Now we will do another type of bracket, like this type of bracket if it comes. Okay, not came, I will not came here. This should come actually. Now we will do it here. It is coming in this side itself, bracket. Okay, here I think this way it will come. Okay. Now we have to make it in that way only. What some bracket came, it came single bracket if we want to write, and if we will press it with yellow key, then it will become curly brace. Yellow keys are also very important. Now we have to make angle bracket for greater than or less than. Okay, we have to make it greater than. Okay, so this way. So if we see, I will see if it don't what happens. Okay, it should come something. It has not come. You will make. So all the 8 brackets
double quote, single quote, back quote. Now we will do caret sign. It will come here itself, here also. Caret. Caret is very important. Yellow tilde. Caret and tilde also came. Back quote, single quote, double quote. 5. Now we will do enter key. Next is dot. Dot is the most important. Full stop. Dot. Space. Space is like dot we have made it in such a way like it is a just single key, because nobody will like to do two keys to make dot or space. They are very important. Underscore is also very important. So underscore, just underscore is also here. Now comes minus. Minus is also very important. So yellow key, minus is a yellow key. Or we can make try here, it will not come because here function keys and there it is difficult. So yellow key is here itself. Okay. Minus and equal to is everywhere. I think it is important. Here it will not come because it will become V here. Here if you will see, it will equal to. So here it is difficult to bring the equal to. If you will see, it comes equal to here. No. Okay. But here it equal to will come, and here also something should come, but it is not coming. Here we will make it. Okay. Now V came, equal to came, minus came, underscore came. All the brackets has come. Now big symbols like at the rate. So what we will do, these are flip at the rate, shift at the rate, then ampersand, then forward slash, backward slash, forward slash yellow key, percentage, pipe symbol, S7, F, exclamation is here, semicolon is this, full colon is this, full stop is this, comma is, we will see this, comma is here, comma is there. So comma, full stop, semicolon, colon, these also got completed. Now our demo is almost finished, and now next we want to tell we can use it with KDE Connect, remote input, keyboard. So now this, if we see, it is a touchpad. Move a finger on the screen to move the mouse cursor. This the cursor we will move here, there, and my finger will move. See, my Linux laptop has become on. Now with these control, alt, shift, cleaning, home, move, function key, I don't need any kind of keyboard or touchpad on my laptop. Neither CD drive is needed, nothing. Just a screen, or we can say we only need mini PC at home. We don't need like complete laptop to carry to our office or carry to our home. We need screens to be in offices or there, or else only our mobile screen. So on laptop, keyboard and touchpad are not so urgent. So they should be now detachable. If somebody wants like, okay, laptop should not have touch screen itself, laptop should not have keyboard, laptop should not have touchboard, laptop should not have CD drive, there is no need. So this is a mouse, KDE Connect mouse, and KDE Connect is installed on Linux laptop also. On keyboard is complete QWERTY keyboard is here. So if you face any problem or if you find any bug, then please write here to 1t.me, telegram.me 1t10 1t10, and you can download this APK from github.com java810 mtr88 download folder. There mtr88.apk will be there. Then we can install in Android. Thank you for having the patience and watching the demo.